हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो तुम सब और कैसा रहा रिवीजन आप सबका? आई होप द रिवीजन पार्ट इज फाइन and you have completed as per the instructions which is provided by me. Have you completed your notes of lesson 1 and lesson number 8? If you have not completed it yet, kindly complete it because we are starting with the new lesson of the syllabus. Today I am going to start with the new lesson. The lesson is from biology. As we have discussed that science is having three parts: physics, chemistry and biology. So the part of science which is dealing with the living world around us is nothing else, it is biology. So we will start with the lesson from biology. It is lesson number 5th of your textbook. The name of the lesson is the fundamental unit of life. I have mentioned part 1 because I am going to cover this lesson in detail. So that's why it's part 1. We'll cover this lesson in 3 different parts. Okay. Some of the parts I'll cover today, some of the parts in my next video and some of the part in the another video of the same lesson. So I'm your teacher Mrs. Nikki Shweta, and let me start with this lesson. So what do you see in this slide? As you can see, I have mentioned the different types of houses here. Now your question should be, ma'am is talking about fundamental unit of life and she is showing us the different type of houses. Why is so? So here, as I have shown you different type of houses, why I am showing you that? Because whenever you are building a house, there is a common thing which is used everywhere. आपका हाउस किसी भी तरह का हो, चाहे वो एक झोपड़ी हो, चाहे वो एक अपार्टमेंट है, चाहे वो एक बंगलो हो, कोई भी तरह का हाउस हो, उसमें एक कॉमन यूनिट होती है जिससे वो बना हुआ होता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कॉमन यूनिट क्या थी, तो जनरली इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक, ईट और कंक्रीट का बना हुआ एक कॉमन यूनिट होता है जिससे मिलके पूरा का पूरा एक घर बना हुआ होता है. यहाँ पे भी मैंने आपको बहुत अलग अलग तरह के घर दिखाए हैं, लेकिन सब में एक बेसिक कॉमन यूनिट है. The reason behind explaining you that common unit in the house is similar to house, we living beings also. We living being means we human, animals around yourself and the plant. It may be a small plant, it may be a big tree, anything. चाहे आपके घर पे आता हुआ एक कोरिएंडर का वो बंच हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे आपके आसपास रहने वाले आपके पेट एनिमल्स हों, चाहे हम खुद हों. वी ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ अ कॉमन functional unit, a common unit which we called as cell. So the lesson, the fundamental unit of life is nothing else, it is all about the study of cell. Study of cell is very important because the living being is composed of millions and billions of cells. So if you know better about the cell, that means you can study deep about yourself also. See, जब भी हमारे लाइफ में कोई थॉट आता है, ठीक है, तो इफ वी आर थिंकिंग इट इन द पॉजिटिव वे, तो हमें वो पॉजिटिव तरीके से ही असर करता है. दैट मीन्स जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो, उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है. बॉडी के ऊपर मतलब क्या? अगर आपने स्ट्रेस लिया तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी. अगर आप किसी दिन हैप्पी फील कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप दिन भर खुश हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है. So that's why I am talking about whenever you feel happy, whenever you everything is catches by the smallest unit of your body, and that smallest unit we called it as cell.
So we are going to study many things about cell in this lesson, but the today's part is the basic introduction of yourself towards the cell. See, you all are promoted from the 8th standard to the 9th standard. So, some of the part, a little study of cell we have done in 8th standard also. But here in 9th standard, it is in the vast manner that it would be help you when you are in the 11th and 12th standard, and if you are taking biology there, then it must be helpful for you. So, be with me and study along with me, so we'll learn better. So here a little introduction about cell. All living beings are composed of a basic unit of life, that is cell. Here again mention living beings, meaning I have explained you right now. Cell word is from the language, Latin word it is, and the meaning of this is small room. Cell were observed. So cells were discovered in year 1665 by an English scientist, botanist. Botanist means the person who are working on the plants. So botanist named Robert Hooke. He has observed a very small piece of bark under a self-designed microscope. See, in the year 1665, so it was very long back. So at that time, very developed kind of microscopes are not present. At that time only, the magnifying glasses are present. So he has designed a microscope on his own and observed the thin piece of cork. Now your question should be, what is the meaning of cork? So cork is a substance which is made up of bark of tree. Bark of tree means क्या? पेड़ के तने के ऊपर छाल होती है जो ब्राउन कलर की होती है, उसे हम बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं. तो उस बार्क ऑफ ट्री से कॉर्क बनाया जाता है. अभी कॉर्क क्या होता है? आपने कभी ये बैडमिंटन खेला है? उसमें भी आप जो शटल होता है उसे लोग पहले कॉर्क बोला करते थे. क्यों बोलते थे? उसके पीछे का जो एरिया होता है वहां पे एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है. दैट स्पॉन्जी सब्सटेंस इज नथिंग एल्स, इट इज कॉर्क. कई मेडिसिन की बॉटल को सील करने के लिए उसके ऊपर कॉर्क लगाया हुआ होता है. कई बार अल्कोहल की बॉटल, एज फॉर एग्जाम्पल शैम्पेन की बॉटल को कवर करने के लिए ऊपर से कॉर्क की फिटिंग दी हुई होती है. सो कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ बार्क ऑफ ट्री, and Robert Hooke has observed that only under the self-designed microscope. When he observed that piece of cork, he has observed that there are very small structure which is present inside that, and that very small structure is somehow very much similar to the house of honeycomb. जैसे मधुमक्खी का घर होता है वैसे ही. So here we had a discussion how the first time the cell is observed. So next, but the cell which is observed by Robert Hooke, it is from the bark of tree, and bark of tree is the dead part of a cell. So the cells which is observed by Robert Hooke, it is also dead in nature. So who has observed the live cell? That we are going to see. The scientist named Leeuwenhoek discovered free living cells. Means first time the live cells are observed by the scientist named Leeuwenhoek. So he has observed the live cell in the a sample of water from a pond, and he has observed that yes, the cells which are living cells, they are the moving cells. Here we are going to discuss in a little bit about a theory which is given by Sheldon, Schwann and Virchow.
This is the theory which is about the existence of cell, and it is called as cell theory. So cell theory is given by these three scientists. According to this theory, all living organisms are composed of one or more cells. Means the organisms may be made up of only one cell or they made up of more than one cell. The cell is the basic unit of structure, function and organization in all organisms. All cells come from pre-existing living cells. That means first line is that all the living beings are composed of cells. It is the basic structure and function unit of the organism. And the last line meaning is pre-existing. That means we cannot create cells. हम सेल को बना नहीं सकते हैं लेबोरेटरीज में या कहीं पे और. They are the living things. So they are made up of on their own. पहले से जो सेल है उसी से अगला सेल बनेगा. किस प्रोसेस से बनेगा ये भी आगे हम देखेंगे. उसका भी एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन है कि कैसे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल बनता है. बट दिस इज द थ्योरी विच इज गिवन हियर एंड कॉल्ड एज सेल थ्योरी. All cells come from pre-existing living cells only. We cannot create cells on our own. A cell is capable of independent existence and carry out all the functions which are necessary. See, as the cell is the part of the living thing, so it is very much required that all the functions, which kind of functions? As for example, the functions are nutrition, respiration, excretion, transportation. These all are the functions which is required for the existence of any living being. So ये सारे प्रोसेस जो भी मैंने ऊपर अभी आपको बताए, these all processes are required to for the existence of any living being. उनके जिंदा रहने के लिए ये सारी चीजें होना जरूरी है. See, this is carried by the living being in their body by different organs. As for example, for nutrition and their digestion, a complete set of organs are there. हमने वो systems कई बार lower classes में भी पढ़े हैं, higher classes में भी पढ़ेंगे. So ये these all systems are working together to achieve a function. So here, if the functions are required for the existence of living being, then these functions must be carried by the small unit also, and that small unit is nothing else, it is cell. आपको जिंदा रहने के लिए ये सारे प्रोसेस करने हैं. तुम्हारी बॉडी में ये प्रोसेस ऑर्गन्स कर रहे हैं. ऑर्गन्स कर रहे हैं मतलब कि ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल. सो ईच एंड एवरी सेल इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द टास्क. ड्यू टू दिस, cell is called the fundamental and structural unit of life. So if anyone asks you the question, cell is very small unit. So why it is called as fundamental and structural unit of life? Because each and every function which is required for the existence of living being is somehow performed by the cell. So this that is why it is called as fundamental and structural unit of life. Here I have mentioned in the study of cell is called cytology. Cytology is nothing else. It is the branch of the biology where specifically the study of cell is done by the scientist. अलग अलग कई ब्रांचेस होते हैं बायोलॉजी के जिसमें अलग अलग चीजों की स्टडी की जाती है. तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ब्रांच जो कि सिर्फ सेल के बारे में स्टडी करेगा, दैट स्पेसिफिक ब्रांच इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी.
So here we have discussed about the history of the discovery of cell, how cells are discovered first. It is discovered by a scientist named Robert Hooke, and he has observed it first time in the bark of tree, but the cells which is observed by him is the dead cell. So first living cell is observed by Leeuwenhoek. It is the name of the scientist. He has observed the cell in the sample of water from a pond. Then we had studied about the cell theory here, which is given by three of the scientists, Sheldon, Schwann and Virchow. They have given the cell theory where the thing is the cells are from the pre-existing cell. They arises from the pre-existing cell, and cell is known as the fundamental, functional and structural unit of life. So here we have discussed about the history of the cell and some of the basic information about the cell. See, why do we need to study about the history of anything? Okay, आप बोलोगे कि ये मैम ने इतना सारा जो भी बताया ये सारी तो बहुत पुरानी बातें थी, तो इनको जानने की क्या जरूरत है? Every time whenever we are studying something, we need to know the study behind history behind it. क्यों? किसी ने बहुत मेहनत से, बहुत पुराने साइंटिस्ट, जबकि हमारे पास रिसोर्सेस भी नहीं थे, तब उन्होंने इस स्टडी को किया है. सो इट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज द बेसिस ऑफ द modern achievement which is achieved by nowadays by the scientist. So पुराने लोगों के ही अचीवमेंट के ऊपर काम करके नई स्टडी होती है, इसीलिए हिस्ट्री किसी भी चीज का जानना हमारे लिए जरूरी होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल साइज, शेप एंड नंबर. अब तुम्हारे मन में ये बात आती होगी कि हमारी बॉडी में जितने सेल हैं, अपने लिए ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, वी ह्यूमन बीइंग. तो वी ह्यूमन बीइंग आर मेड अप ऑफ मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल. सो व्हाट, क्या हमारी बॉडी में जितने सेल हैं वो सब एक जैसे सेल है? इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सेल, तुम्हारे दिमाग में एक राउंड स्ट्रक्चर आता है कि सर्कुलर शेप का एक स्ट्रक्चर है जो कि कहीं पे सेल है. लेकिन क्या सेल हमेशा सर्कुलर इन शेप होते हैं? नो, इट इज नॉट लाइक दैट, एज वी आर मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सेल्स. हमारे एक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं. ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी एक ही तरह के सेल से बनी है. एंड इट इज नॉट अबाउट अस ओनली, plants also, animals also, in their body also various different kinds of cells are present. These cells are varies in the terms of their size, shape and their number also. It depend on the type of the organism. It depend which kind of cells are present in their body and what is the number of the cells. See, if the organism is big in size, multicellular organism, and we are big in size, then of course the number of cells are different. If a unicellular organism, as for example simple organism, bacteria, amoeba are there, then the number is one only. So it depends on the number, type of organism, number of cell depends. Now the cell size, it also depends on the different type of organism. The size of cell also depend. It can be a very little from a micrometer in diameter, or it may be big in size also. Very important information here, or interesting also. The biggest cell is the egg of the ostrich. ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, उसका एग सबसे बड़ा सेल है. अभी यहाँ पे मैंने आपको शेप के बारे में बताया कि सेल्स आर वेरियस काइंड ऑफ शेप्स. इट इज नॉट लाइक दैट कि इट इज ओनली सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन शेप. इट मे वेरीज
अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल हैं, वो सारे सेल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट इन द आईज। आंखों में जो सेल है, दीज सेल्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज द लाइट, क्योंकि आंखें हमारी जो है लाइट के प्रेजेंस में काम करती हैं। सो दीज सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द आईज मस्ट बी सेंसिटिव टू द लाइट, but the cells which is present in the heart, it should be different from the cells which is present in the eyes. So it depends on the function of the organism or function of the organ, the type of cell also changes. So एक ही human being है, हमारी बॉडी में अलग अलग organ है, तो अलग अलग तरह के सेल हर जगह पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं कि सारे सेल एक जैसे होंगे। Here I have mentioned there is much variation in size, shape and number of cells in different organisms and also in various parts of the body. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में तो अलग अलग तरह के सेल होंगे ही, और एक ही ऑर्गेनिज्म में उनके बॉडी पार्ट्स में भी अलग अलग तरह के होंगे सेल्स। Cells may be spherical, spindle shaped, elongated, polyhedral or irregular in shape. The shape of cell is determined by the specific function they perform. क्या काम करना है सेल को, उस पे उनका शेप डिपेंड होता है। I'll give you a very interesting example here. I would like to. The example of nerve cell. As you are familiar with, nerve cell are the cells which is required to pass the message from the brain to the body, from the body to the brain. हमारी बॉडी में जो कुछ भी होता है, these all are under the control of brain. So nerve cells are the cells which is having the function to take the information from the nerve cells. सो नर्व सेल का काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ मैसेज। तुम्हारे हाथ जल रहा है, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यस माय हैंड इज बर्निंग एंड दैट इज हाउ यू पुल योर हैंड फ्रॉम देयर। सो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? नर्व सेल्स कर रहे हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन भी बोल सकते हो। सो देयर function is to pass the message, transfer of message. So transferring of message is the function of the neuron. That's why they are elongated in shape. वो बहुत लंबे होते हैं। Nerve cells can be a meters long. एक nerve cell 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। So here we had a talk about cell size, shape and number. Here in this figure, I have shown you various cells from human body. These all cells which is shown here, these all cells are from our body only. As for example, these are the cells which is present in blood. Here it is smooth muscle cell. हमारे muscles में जो है, this is the egg of the female reproductive system. Sperm from the male reproductive system. Egg or ovum and sperm, these two terms are familiar with you. You have studied in reproduction in animals in standard 8th. Bone cell, nerve cell is also there, fat cell is also there. So these all are different type of cells. They are having different shapes and sizes and they are present in our single body, that is the human body. Why their shapes and sizes are different? Because they have to perform different functions. That's why they are having different shapes and sizes. सबको अलग अलग काम करने हैं, इसीलिए इन सब का शेप और साइज एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग अलग है। Moving to our next topic. Am I clear to you all till this topic? If any query is there, kindly write in the feedback column. I'll get back to you. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज पूरे सेंटेंस में वहां पे मुझे बताइए,
ताकि मुझे समझ में आए. एंड काइंडली मेंशन द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो. देन आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ओके. Here I have divided organisms on the basis of number of cell. कितने सेल हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. I have given some examples of unicellular organisms there: amoeba, bacteria, paramecium, yeast. In 8th standard, the second lesson is about the microorganism. There you have studied about these unicellular organisms. And here I have shown you some of the multicellular organism. Dog is there, animals, we human beings are there, cats are there, many plants are there. So we all are the examples of multicellular organisms. So it is on the basis of number of cell, organisms can be categorized into two classes. Unicellular, uni means one होता है, ठीक है. The meaning of uni is one and the meaning of multi is more than one. So multicellular मतलब वो हमेशा बहुत बड़ा हो साइज में, ऐसा नहीं है. सिर्फ एक सेल से अगर ज्यादा है then it is called as multicellular organism. So organisms are of two type: unicellular made up of one cell, multicellular made up of more than one cell. एक से ज्यादा सेल से बने ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर. सबसे कॉमन एग्जाम्पल वी ह्यूमन बीइंग्स. प्लांट्स आर ऑल्सो मल्टीसेल्युलर इन नेचर. जो आपके आसपास आप प्लांट्स देखते हो, दीज ऑल प्लांट्स आर मल्टीसेल्युलर इन नेचर. Here a very specific term is here: prokaryotes and eukaryotes. In 8th standard, we had a little discussion about prokaryotes and eukaryotes. Here, why I have mentioned this? Based on the complexity of organization, especially nuclear organization, the cells are classified into two types. सेल्स की भी टाइप होंगी, अलग अलग ऑर्गन में प्रेजेंट सेल हैं, अलग अलग टाइप्स हैं. हियर दिस टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ कि सेल का न्यूक्लियस कैसा है. इफ एनीवन आस्क यू हाउ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर डिवाइडेड, इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस. सेल का न्यूक्लियस कैसा ऑर्गेनाइज्ड है उस पे बेस्ड है ये सेल के टाइप्स. Prokaryotic cells and eukaryotic cells. Moving to the next, prokaryotic cell. See, whatever is written here, that is for you. But before starting that, मैं आपको ये बताऊं कि अर्थ पे, हमारी धरती पे जब ऑर्गेनिजम्स आए थे, तो these organisms are started from the simple form of the organism and then they are changes into the complex one. ऐसा नहीं कि धरती जब शुरू हुई तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग आ गए थे. धरती की जब शुरुआत हुई तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली. बैक्टीरियाज आए, एल्गीज आए, पहले ये ऑर्गेनिजम्स आए, फिर उसके बाद काफी बाद में ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस हुआ. बट बैक्टीरिया एंड एल्गी दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल. तो उनमें भी सेल है, लेकिन वो सेल की टाइप हमारे सेल की टाइप से बिल्कुल भी अलग है. दीज आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म. प्रिमिटिव मीन्स क्या? बहुत पुराने. बहुत मतलब कितने? ये लाखों साल पहले की बात है, जबकि धरती की शुरुआत हुई और ये ऑर्गेनिजम्स धरती पे आए. तब जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी बॉडी में जो सेल था वो सेल, और आज जो ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमन बीइंग और दूसरे बहुत सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उनके सेल और हमारे सेल में अंतर था. अभी ये नई बात है कि जब ह्यूमन बीइंग आ गए तो बैक्टीरिया नहीं रहे. अभी भी बैक्टीरिया और एल्गी हैं. मतलब कि अर्थ पे एक ही साथ पुराने तरह के सेल भी हैं और नए तरह के भी सेल हैं. पुराने सेल किनकी बॉडी में प्रेजेंट है? जो पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी हैं,
So the type of cell which is present in the primitive organism, they are the prokaryotic cell. And the cell which is present in the organism which is present on the earth afterwards, these cells are the eukaryotic cell. So these are the two different kind of cell. In the starting only I have mentioned you कि prokaryote और eukaryote को हमने कैसे डिवाइड किया है. इट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन. उनका न्यूक्लियस कैसा है उस पे बेस्ड है ये. सो वील मूव टू कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस कैसा है. If we are talking about the term prokaryote means pro means primitive, caryon means here it is about nucleus, primitive nucleus. जनरली जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल्स जो आप देखते हो, उसमें न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन होता है. न्यूक्लियस एक बाउंड्री वॉल से बाइंड होता है. बट इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज ओपन. उसके किनारे कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं होता है. सो द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी lack a well organized nucleus and are called prokaryotic cells. Their DNA is not enclosed by a nuclear membrane. They also lack membrane bound organelles. DNA जो होता है, DNA क्या होता है? Genetic material है. We are going to talk about DNA again in the part of nucleus also. But here DNA, full form of DNA is deoxyribonucleic acid. It is not surrounded by a nuclear membrane and they are considered to be a primitive organism. Primitive means पुराने organism. I have shown you a typical figure of a prokaryotic cell. आप देख रहे हो ये बीच का जो पार्ट है, जो ब्लू पार्ट से आपको दिखाया है, that blue part is the nuclear material or DNA. This is not surrounded by any membrane here. इसके किनारे कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है. It is open. So it is present in the open and that is the prokaryotic cell. इसमें एक फ्लैजिलम नाम का पार्ट देख रहे हो. That part helps into the movement of this cell. These cells are unicellular in nature. They might be living in water also. So वहाँ पे water में उनको movement के लिए चाहिए, तो यहाँ पे ये हमारे पास है. In our textbook also prokaryotic cell structure is given, but it is not very much clear. So I would like that you can refer the internet for the figure, or you can take a snapshot here also. You can take a screenshot of this also, or either you can fetch out the figure from the internet, no problem. Okay, so prokaryotic cell हुए यहाँ पे. अभी eukaryotic cell, the cells of all plants except bacteria and cyanobacteria and animals possess a well organized nucleus and are called eukaryotic cell. Their genetic material is enclosed by a nuclear membrane. They possess membrane-bound organelles like Golgi body, mitochondria, plastids, and vacuoles. See, these names are mentioned here, but we are going to talk it about in the detail in the next videos also. Just to the name. So, eukaryotic cells are present in the developed organisms, in the plants and animals which is around ourselves. आपके आसपास जो भी आप देख पा रहे हो, all plants, animals और हम खुद, हमारे बॉडी में जो सेल हैं, they are the eukaryotic cells. Here what is the difference? The DNA which is present in the cell, that DNA is covered by a nuclear membrane. I'll show you the figure of the eukaryotic cell also. See here the purple portion here, that is the nucleus, and here is the nuclear membrane, the nuclear material. जो DNA की बात हो रही थी ना, वो DNA यहाँ पे कहाँ है? इस न्यूक्लियस के अंदर बंद है.
जबकि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, वो मटेरियल जो था इट इज प्रेजेंट इन द ओपन फॉर्म ओनली. So this is the difference between that prokaryote and the eukaryote. I'll show you the difference between them. Here the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Size is generally small. Prokaryotic cells are very small in size, 1 to 10 micrometer. The sign which is like U is here, it is nothing else, it is called micrometer. The value of micrometer is 10 raised minus 6. Eukaryotic cells are generally large in size. Nuclear region poorly defined. It is present in the open. Nuclear membrane नहीं है. Nuclear region is well defined. Nucleus जो है nuclear membrane से surrounded है. Chromosome. Chromosome क्या है? ये genetic material है. It is present in the single form. And eukaryotic cell it is more than one chromosome. Membrane bound cell organelles absent. सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट है. In your textbook, in the in-text question, they have asked you about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. You can fill these information there. वहाँ पे आप ये information को use कर सकते हो. By the time I have explained you should take it in the screenshot that you can fill it, or you can go through the textbook also and you will get this information. See, textbook reading is very important at this point. मैं पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन उसके बाद भी जितना मैंने पढ़ाया है वो टेक्स्ट बुक से रेफर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्योंकि क्या होगा, जब मैं पढ़ाऊंगी आप सुन रहे हो मुझे, लेकिन जब आप खुद टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको मेरी बातें उस टाइम पे रिकॉल होंगी एंड यू कैन मार्क, यस टीचर ने ये बोला था, टीचर ने ये ऐसा बताया था. So textbook reading is very important because you are studying on your own at your home. हम पर्सनली नहीं मिल रहे हैं. So textbook reading is very important here. Okay. Here, on the basis of type of organism, type of cell. Basically, living being is divided into two classes: plant and animal. And there are some of the basic difference which is in between plant cell and the animal cell. See, when we are going to study about the cells, it is in the very detailed manner. हम एक एक part of cell को पढ़ने वाले हैं, लेकिन plant cell और animal cell के बीच का जो basic difference है, that I would like to share here. We had studied this part in the 8th standard also. हमने वहां पे भी differences पढ़े हैं. So plant cell has an outer rigid cell wall which is made up of cellulose. Animal cell lacks a cell wall. Plant cell में cell wall होता है, animal cell में cell wall नहीं होता है. Plant cell is larger in size. Animal cells are comparatively smaller. Cell ही बहुत small होता है, लेकिन उसमें भी plant cell is larger than the animal cell. Plant cell has large vacuole which occupy more space in the cell. Animal cell usually lacks vacuole, होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत छोटी साइज का होता है. Vacuole is the part. When we are going to study about the organelles, at that time we will study about it. Centrosome is present only in cells of lower plants. All the animal cells have centrosomes. Lysosomes are found only in the eukaryotic plant cell. Lysosomes are found in all animal cells. Lysosome is again the organelle. Plant cell contain plastids. क्यों होते हैं plant cell? Plant cells are performing the process of photosynthesis. And for photosynthesis they require chlorophyll. And that chlorophyll is present in plastids. So that's why plant cell is having plastid, animal cells are not having plastid.
plant cells are making the food in the form of starch, and whatever starch is used, the remain material is stored as the form of starch. एनिमल में जो खाना हम यूज नहीं करते हैं वो खाना ग्लाइकोजन की तरह स्टोर होता है, फैट की तरह, और प्लांट सेल में स्टार्च की तरह. So here we had lots of discussion. I think for today it is the time that you revise the things which I have explained you today only. In the next topic of our, we'll see the basic parts of the cell, some of the basic part which is common in each and every cell. So that parts we will cover in the next video of ours, and the organal part in the next video of mine. So 2 वीडियो और अभी रहेंगे इस लेसन के. आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक जल्दी से रीकैप लेते हैं. हमने पढ़ा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. It is discovered by Robert Hooke. Then we had a study about Leeuwenhoek. Leeuwenhoek has discovered about the cell, the living cell, about the cell theory, types of cell, different types of human cell, prokaryotic cell, eukaryotic cell, primitive organisms, they are having prokaryotic cell, developed organism, eukaryotic cell, difference between prokaryotic and eukaryotic cell, and we have a discussion about the difference between plant and animal cell. So you revise the portion, stay healthy, happy at your home, take care of yourself. Bye. We'll meet again in the next video. Bye everyone, take care of yourself.